Okay, correct. So log to the base 10 K is equals to log to the base 10 A minus EA upon 2.303 RT. This is the another Arrhenius equation. Those who are absent yesterday, for them I'm just revising. So this is called as Arrhenius equation. This A stands for frequency factor or exponential factor. That is also called as Arrhenius constant. ठीक है? EA stands for activation energy and K2 and K1 are called as rate constant. जब दो different rate constant दिया रहेगा, दो different temperature दिया रहेगा, that time you have to use this equation. And when you are having only one rate constant and one temperature, that time you have to use this equation. We have solved 2-3 numericals on that, so you can take it from your friends also. ठीक है, तो he has given a direct relationship between all these. That is called as Arrhenius equation. और एक मैंने theory सिखाई थी which is called as collision theory. So it is just a quick revision. What is collision theory? If I want to convert A into B, it will give me a product, correct? So here I will say that for any reactant to get convert into the product, there has to be 4 different steps. What is the first step? There must be a collision between reacting molecules. If there won't be any collision, there won't be any reaction, correct? So collision is must. What is collision? Collision मतलब टकराना, ठीक है? Suppose I have a container. In this I will take reactant A and reactant B. Until unless they will collide with each other, reaction will not take place. So first condition is collision. Okay, what is the second condition? It is called as activation energy, which is denoted by EA, correct? This activation energy represents minimum amount of energy which is required for the collision. For this collision also we need some energy, correct? So that is called as activation energy. Third thing is, whenever you are doing any reaction, there has to be a proper orientation of the reacting molecules. Suppose आपका A plus B है और आपका reaction join होना है A to B, but अगर B to A join हो गया तो R and S configuration पढ़ा होगा अपने organic में, correct? So it will change your product. So proper orientation is important. And the last part is called as potential energy barrier. Okay, what is that? Suppose I'm plotting a graph over here and this graph is like this. I want to convert reactant into the product. For any reactant to fall into the product, it has to pass this barrier. यहाँ से जब तक वो पास नहीं होगा आपका प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो. आई एम सॉरी, एक मिनट, मेरा फोन ही गिर गया. Just a minute. Okay, can you hear me, बच्चों? Hello. Yes, ma'am. हाँ, okay. ठीक है? Yes, ma'am. So, okay. So whenever I want to do any reaction, I have to pass from this potential energy barrier. This is called as transition state. This is called as activated state. So for any reactant to get convert into the product, these 4 conditions are very, very important. चारों में से एक भी condition गायब होगा तो आपका reaction नहीं होगा. You are saying there is a collision, but there is no proper orientation, no reaction. You are saying all these 3 things are happening, but a reactant is not able to pass this transition state. Reaction will not take place. तो यही collision theory हमने कल किया था और ये Arrhenius equation किया था, इसके ऊपर numericals किए थे. ठीक है, तो ये क्या है? K1 and K2 rate constant. A stands for activation energy, R stands for gas constant, which is 8.314. T2 and T1 are the 2 different temperature. This is called as frequency factor. ठीक है, so अभी एक numerical मैंने आपको 2 numerical मैंने homework दिया था. Have you done that? Have you done that? Yes or no? आया कि नहीं आया इतना बोलो ईमानदारी के साथ. Don't waste my time. नहीं किया तो we will solve. Okay, write on the question. What is the energy of activation? This is from your text question, page number 137. आप लोग के इसमें page some number अलग है, तो you just write on the question. What is the energy of activation? Today I'm going to finish this chapter. अपना बहुत थोड़ा सा part बचा है, बहुत थोड़ा सा. So we will finish this. I will take only 2 numericals now, and then very small theory part is left, and we will finish this chapter. So from tomorrow we'll do new chapter. And sir will inform you regarding the timetable and everything. ठीक है? चलो, what is the energy of activation of the reaction? What is the energy of activation of reaction?
whose rate constant doubles, whose rate constant doubles when temperature changes from, when temperature changes from 303 Kelvin, 303 Kelvin when the temperature changes from 303 Kelvin to 313 Kelvin. What is the energy of activation of a reaction whose rate constant doubles when the temperature changes from 303 Kelvin to 313 Kelvin? Okay? We have to calculate over here what is activation energy. They have given us two different temperature. T1 is 303 Kelvin and T2 is 313 Kelvin. Bolo, which formula should I use? That double temperature wala or single temperature wala? Hello, डबल टेम्परेचर वाला करेक्ट. अच्छा एक सम किया है क्या? ठीक है, डबल टेम्परेचर वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे. अब देखो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ योर सेंटेंस. द रेट कांस्टेंट डबल्स मतलब k1 by k2 is equals to 2. Sorry, k2 by k1 is equals to 2. K2 is twice of k1. This is also given. Chalo, now we will write down the formula. What is my formula? I will write down here log to the base 10 k2 by k1 is equals to EA upon 2.303 into R T2 minus T1 upon T1 into T2. Now log to the base 10, directly they have given it is 2, that is equals to EA upon 2.303 into 8.314. ठीक है. Then after that, what is your temperature 2? It is 313 minus 303 divided by 313 into 303. What is the log of 2? It is 3010. very good. 3010. That is equals to EA upon 2.303 into 8.314. ठीक है. Into कितना बचा? 313 minus 303 10 divided by 313 into 303. Now it's very simple to solve. EA is equals to, ये सब ऊपर जाएगा, 0.3010 into 2.303 into 8.314 into 313 into 303 divided by 10. ठीक है. अब ये 10 को भी ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा? 10 raised to minus 1. Correct. And since you have to take out the log, so shift this point. 30 बना दो इसको. I will make this 30. 30.10 into 2.303 into 8.314 into 313 into 303 into 10 raised to, यहाँ से 2 पॉइंट शिफ्ट किया और ये एक ऊपर जाएगा तो 10 raised to minus 3. Am I right? Yes or no? Yes. Yes, हाँ ma'am. चलो अभी सबका लॉग निकालो फटाफट एंड टेल मी योर आंसर. ठीक है. लॉग ऑफ 30.10 प्लस log of 2.303 plus log of 8.314 plus log of 313 plus log of 303 into 10 raised to minus 3. चलो फटाफट सॉल्व करो and tell me your answers. Is it clear for everybody? They have said K2 by K1 is equals to 2. It is twice of that. So you have to take care that thing. ये वाला सब नहीं सॉल्व किया था क्या? कौन सा वाला नहीं सॉल्व किया था? ये वाला श्रुति? ये वाला ही नहीं. ओके Yes, ओके. ma'am. उसके बाद वाला सम का आया आंसर 9.72 into 10 raised to 6 आया Yes, क्या? ma'am. Yes, सबको आया? ma'am. ओके ठीक है. लिख लो इतना फटाफट से. नीचे रखो कैमरा. लिख लिया. Divesh understood. Those who were absent yesterday due to the इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम और कुछ लोग तो जानबूझ के ही नहीं आए होंगे. Have you all understood this?
Yes, ma'am. Okay. If you have any doubt, you can ask. तुम लोग सॉल्व करो, तब तक मैं नेक्स्ट वाला सम सॉल्व करती हूँ. ओके ओके. यस दिवेश, नो प्रॉब्लम. यू कैन सी द वीडियो. इट्स वेरी सिंपल. और एक डेरिवेशन सिखाया था और 3-4 न्यूमेरिकल्स लिए थे. कोलिजन थ्योरी सिखाया था. इतने सिखाया था कल, तो ज्यादा मिस नहीं हुआ है. कल कम ही सिखाया था मैंने, मुझे पता था. बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इशू पीपल वर एब्सेंट. चलो ये सॉल्व करके आंसर बोलो मुझे, ठीक है? लेट मी नो योर आंसर्स. हाँ, yes, what is the answer? Correct. I've got some answers. यश, कौन सा आंसर भेजा ये बच्चा? अच्छा, पहले वाले, सेकंड वाले का आंसर इज राइट. 54.66 kilojoules per mole. Correct. Correct, Kashish. What about others? Answer is 54.66 kilojoules per mole. हाँ, correct है श्रुति. If you are going to multiply that by 10 raised to plus 3, तो वो कैंसिल होके आपका 54 आंसर आ जाएगा. करेक्ट. करेक्ट है दिवेश, वेरी गुड. यस प्रगति, परफेक्ट आंसर. I hope everybody got this answer. उसके बाद वाला सम आया ना सबको, रेट कांस्टेंट वाला, उसमें आपको फ्रीक्वेंसी फैक्टर कैलकुलेट करना था.
means you have to calculate A value, log to the base 10 A. So A you are supposed to calculate. ठीक है? चलो next question लिखो, उसके बाद वाला. Show that, ready everyone? Next question, show that time required for 99.9% completion of 99.9% completion of first order reaction is 3 times the time required for 90% completion. Means we have to show that time required for 99.9% reaction is 3 times time required for 90%. This we have to show by using our first order reaction. Question understood everybody? What is the question? We have to show that the time required for the completion of 99.9% of the reaction is 3 times then the time required for the completion of 90% of the reaction. ठीक है? मिस मतलब 90% के बाद बहुत टाइम लगा ना उसको जाने का. हाँ yes मतलब ये इसको लगने के लिए, इसका कंप्लीट करने के लिए इसका 3 टाइम्स लगा. हाँ बराबर बोला, करेक्ट. चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, दिस वी हैव टू शो, दिस टू प्रूव. बराबर. चलो तो सबसे पहले आई विल राइट डाउन हियर k is equals to 2.303 upon t log to the base 10. फिर क्या लिखेंगे, a naught upon at. करेक्ट. तो अभी मैं इसको t को यहाँ पे लेके जाती हूँ and I will write down here 99.9% वाला. That is equals to 2.303 upon k log to the base 10. If I am taking here 99.9% has been completed. So what is the initial concentration? I have told you whenever it is in the percentage, what you are supposed to take initial concentration? 100%. 100%. Very good. So it will be 100 divided by 99.9% use हो गया, तो बचा हुआ कितना है? 0.01. 0.1 ना, only 0.1. 0.1 कैसे? 0.1 मिस. हाँ बराबर 0.1. चलो now we will solve this. 2.303 upon k log to the base 10 100 divided by 99.9 है ना. हाँ बराबर है ना. तो ये हो अगर गया -1. 99.99 होता तो 0.01. हाँ बराबर, करेक्ट. तो ये हो गया -1. It will go up. So what it will write, we will write down here 2.303 upon k log to the base 10. ये 1000 हो गया. Yes or no? This -1 will go up, becomes +1 and it became 1000. Correct? Now we will write down 2.303 upon k log of 1000 कितना है? 1 2 3 4. So it is 3.0000. Am I right? Log of 10 क्या रहता है? 0 ही रहता है ना? Yes or no? देखो log of 10 देखो कितना है? 0 है. And what is the characteristic? It will be 3. ठीक है? ये हो गया मेरा T 99.9%. This is suppose equation number 1. Now I will take here T 90%. So 2.303 upon K log to the base 10. Initial concentration तो 100 रहेगा and 90 has been used, completed. So what is the remaining part? 10%. 10%. Correct. So ये cancel हो गया. I will write down here 2.303 upon K
log of 10 is कितना हो जाएगा 1.0000. yes or no? This is my equation number 2. Clear? Any questions so far? No. चलो अभी क्या करेंगे, dividing 1 by 2. So I will write down here T99.9 divided by T90%. ठीक है, अभी ये लिखो पहले क्या कहा गया ये वाला. So I will write down 2.303 upon K into 3. This is divided by 2.303 upon K into 1. ये सब cancel हो गया. What I got? 99.9% is equals to divided by T90% is equals to 3. आ गया आंसर. T99.9% is nothing but 3 times of T90. ये ना 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बोर्ड्स में आया था. So this is proved now. Any questions? Have you understood this? What I did? Yes, ma'am. सबको समझ आया? See what I said, initial concentration is 100. पहले कितना यूज हो गया? 99.9% has been used, so 0.1 will remain unreacted. So you will just do this. ये आ गया 3. और ऐसा नंबर देते हैं ना प्रूफ करने के टाइम पर, so that you can directly cancel it. अभी log of 10 तो सभी को पता है, कुछ कुछ logs आपको solve करते करते याद हो जाएंगे, बराबर. So you will write down over here 3. तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. और फिर हम लोग को ये प्रूफ करना है ना, तो ऑब्वियसली देखो ध्यान दो, यहाँ पे ये नीचे जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, मींस एनी हाउ यू हैव टू डिवाइड दैट. सो वी विल टेक द सेकंड वन. 100 था, 90 यूज हो गया, मतलब 10 बचा. करेक्ट. सो आफ्टर दैट यू विल गेट दिस. क्लियर? यस मैम. ओके चलो लिख लो फटाफट से. कुछ नहीं समझा होगा तो पूछो. अभी आपके टेक्स्ट बुक में कितना क्वेश्चन नंबर है वो मुझे नहीं पता, मेरा टेक्स्ट बुक अलग है थोड़ा, numbers are different. So do it fast. 17. If you have any doubt. Question number 17. Page number same है क्या? Page number 137. Yes, ma'am. Yes, yes, correct. Only formula you should remember. That's it. ये पता है नीट में भी पूछा था क्वेश्चन. एंड इफ विल सी सीबीएसई आईसीएसई स्कूल, वहां पे भी ये क्वेश्चंस पूछते हैं. उनका अगर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो ये क्वेश्चन उसमें भी है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये नीट में आ चुका है 4 मार्क्स के लिए. इवन बोर्ड्स में दे हैव आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स. हो जाएगा तो बोलो. आई विल पुट माय कैमरा डाउन. ओके लिखो. दिख रहा है अच्छे से? डन मैम. डन एवरीबॉडी? Done, ma'am. ओके चलो. So I think I have taken almost all the numericals. जो एक आधा रह जाएंगे, that is your homework. You have to do that. ठीक है? Now I will take the last part of the chapter. That is the catalyst and the temperature dependence. इतना ही बचा है.
5-10 मिनट में हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर, एंड देन आई विल टेक ऑल योर जो भी इसमें डाउट्स है, और अगर एक दो न्यूमेरिकल कुछ बचा है तो आई विल टेक दैट आल्सो. ठीक है, चलो अभी हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे? वी हैव डन टिल Arrhenius equation. Now we'll do the graphical description of effect of temperature. Just give me a second, I'll just turn my page. We are going to keep your revision lectures. That will be in the evening, Monday and Thursday. ठीक है, sir will inform you. So in that case, we are not going to do any teaching part. That will be purely your doubt solving sections. So जो भी जितने भी chapters हुए हैं, morning में I will take your regular lectures 10:30 to 12, and evening will be your revision lecture 2 days. So Monday and Thursday. So you will get ample of time to revise, to find out your doubts. तो हम लोग ऐसे चैप्टर वाइज डिवाइड करेंगे. ठीक है, जैसे अभी केमिकल काइनेटिक्स एकदम फ्रेश है, तो पहला डाउट सॉल्विंग हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का ही ले लेंगे. तो आई विल टेल यू टू रीड हाफ चैप्टर या फुल चैप्टर. तो एक लेक्चर में उतने पार्ट में जितना डाउट्स है वो पूछना है. तो नेक्स्ट लेक्चर में उसका हाफ पार्ट का डाउट्स पूछना है. इफ यू हैव एनी डाउट इन द न्यूमेरिकल theory part, I am not going to teach you anything. You have to ask the doubts, and that will be for 1 hour, 2 days. ठीक है, so in that case, in that manner we will do. चलो, now we will do here a graphical representation or graphical description of effect of temperature. Okay, generally what is the observation to the rate of the reaction? As the temperature increases, rate of reaction also increases. ये चीज आपको अपने दिमाग में बिठानी है. ठीक है, as the temperature increases, rate of reaction also increases. Why will it increase? What do you think? Why on increasing the temperature, rate of reaction will increase? What is the reason? मींस उसका पोटेंशियल बढ़ता है ना, तो वो ज्यादा फास्ट रिएक्ट करता है. पोटेंशियल नहीं बढ़ता बेटा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है ना. घूमने वाला बढ़ेगा ना, मूवमेंट बढ़ेगा. हाँ मिस वही. हाँ, करेक्ट. So you're right, but it is kinetic energy. Suppose I have a container. In this I have a gas molecules or any reactant molecules. अब ये धीरे 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 they are moving, they are colliding with each other, and then reaction will takes place. So the fraction of reaction will be very less, क्योंकि बहुत slow होगा reaction, but it will be very slow and not up to the mark, right? But if I'm going to heat this container, what will happen? Your reactants will move faster. Their kinetic energy increases and they will start moving faster. They will collide to the greater extent and they will give you the more amount of product. Understood? Because here, by applying the temperature, we are increasing their activation energy as well. Right? Because we need some minimum amount of energy we need for the reactant to get collide with each other. So if you're going to increase the temperature, anyhow, you are going to increase its activation energy, its kinetic energy, proper orientation will take place, and hence your reaction takes place faster. ठीक है? So आपके textbook में ग्राफ दिया हुआ है, वो छोटा सा ऐसे पैराग्राफ है, कुछ है नहीं उसमें. They have given one graph. This is the graph 1. And this is the graph 2. This is at temperature T1 and temperature T2. Correct? They have said temperature T2 is greater than T1. मतलब कौन सा temperature ज़्यादा है? This temperature is more. You can see the area of your curve. It is more. Yes or no? Means more amount of reaction has been taken place. And you can see the height of the activation energy curve. इसको बोलते हैं activation energy curve. ये जितना छोटा रहेगा उतना फास्ट आपका रिएक्शन होएगा. ठीक है, सपोज यू वांट टू गो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, सो यू नीड समथिंग, दैट इज द ब्रिज. इफ यू विल गो बाय वॉकिंग, यू विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम. करेक्ट? तो यू नीड अ ब्रिज. तो ये जो ब्रिज है, बट ब्रिज का हाइट भी छोटा होना चाहिए ना. अगर ब्रिज बहुत ऊंचा होगा तो कैसे पास करोगे? यू नीड लॉट्स ऑफ टाइम. सो योर ऑल्सो दिस एक्टिवेशन एनर्जी कर्व हैज बीन lowered and rate of reaction has been increased. You can see the broadness of the curve, मतलब maximum reaction हो गया. But in this case, as the temperature is less, you can see this area, it is smaller than this, and height is also
very much. So reactant is not easily converted into the product. Understood this? So this is the graphical description of temperature or effect of temperature. So in short, what we have मिस वो to say, XY एक्सिस पे क्या है? x और y axis पे है fraction of molecules with kinetic energy, and here it is the comparison of the temperature, comparison of the fraction of the molecules with activation energy. So here you are doing the comparison, and here it is a fraction of molecules with kinetic energy. Kinetic energy matlab with respect to the temperature. Clear? Understood? Yes or no? Yes. सबको समझा? और उसका जो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो टेक्स्ट बुक में से पढ़ लो एकदम अच्छे से. कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल. एक एक ऐसे दो दो लाइन है और फालतू में लंबा लंबा लिखा है. चलो अभी नेक्स्ट. This is the last part of your chapter. That is the effect of catalyst on the rate of the reaction. अच्छा, first of all tell me what is the catalyst? मिस वो रिएक्शन को स्पीड अप करता है मगर उसमें पार्ट नहीं लेता. Very good. Is the catalyst generated in the reaction, or you are adding it from the external sources? Adding मिस. External Adding it. Okay, very good. We are adding it from the external sources. Barabar, correct. Okay, one more question. Can catalyst initiate the reaction, or catalyst is adding into the reaction which is already in the progress? What is the true thing? नहीं मिस वो ऑलरेडी प्रोग्रेस में. Very good. Catalyst will never initiate the reaction. ये आपने 11th standard में भी किया होगा. Catalyst will never initiate the reaction. It will speed up the reaction which is already in the progress. ठीक है. Catalyst कभी react ऐसा है ही नहीं कि अगर catalyst नहीं होगा तो मेरा reaction नहीं होगा. होगा reaction. I will take A plus B gives me product. देगा वो मुझे 10 साल के बाद दे, but I will get the product. But what catalyst will do, if I'm going to add the catalyst over here, it will speed up my reaction. So this reactant will immediately get converted into the product, even if I'm requiring 10 years. So it may happen in 10 minutes also. It depends upon the selectivity of the catalyst. Clear? So here, what is the main role of the catalyst is, देखो अभी मैं ना दो ग्राफ बना रही हूँ. You have to tell me what is the difference in this. ठीक है, ये मेरा potential energy curve है. This is my energy and this is my reaction coordinate. मतलब reaction कैसे हो रहा है. यहाँ पर reactant है, यहाँ पे product है, and this is my transition state or highest. This is without catalyst. This curve is without catalyst. I'm going to plot a similar curve. Again, it is energy, it is reaction coordinate, and you just see the nature of the curve. इसका height थोड़ा सा छोटा है. Reactant and product. This is the transition state. This is with catalyst or in presence of catalyst. What is the difference you are observing here? फर्स्ट ग्राफ में पोटेंशियल एनर्जी बैरियर हाई है. Very good. लो. तो ज्यादा इजी किस में है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में पहुंचाना? सेकंड वाला लोअर में. सेकंड वाले में. एब्सोल्युटली करेक्ट. दिस इज सपोज ग्राफ नंबर 2, दिस इज ग्राफ नंबर 1. सो व्हाट इज इजियर? In this case it is easier for the reactant to form into the product, or in this case it is easier for converting into the product? Of course in this case. तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि इसका हाइट छोटा है. जितना हाइट छोटा होगा ये कूद के यहाँ पे पहुंच जाएगा बहुत इजीली. It is very easy for reactant to fall into the product because the height of the curve is less. मतलब activation energy curve is lower. ठीक है. Activation energy curve, इसको बोलते हैं activation energy curve is lower. So what catalyst is doing, main role of the catalyst, it lowers the activation energy curve, it will speed up the chemical reaction, and it will take place faster even at the room temperature. So this is called as uncatalyzed reaction, and this is called as catalyzed reaction. So what we will prefer in the laboratory, should we use the catalyst or not? use the catalyst. Of course we should use the catalyst. ठीक है. और अगर आप फ्रैक्शंस भी देखोगे तो फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है? dn/n. वो इसमें किया होगा चैप्टर में. कौन सा चैप्टर था वो? न्यूक्लियर केमिस्ट्री. ठीक है. dn/n वर्सेस एनर्जी. सो इफ यू सी द फ्रैक्शन, जो कैटलिस्ट के साथ फ्रैक्शन आता है वो हायर रहता है. मींस मोर नंबर ऑफ द रिएक्टेंट आर कन्वर्टिंग इनटू द प्रोडक्ट.
और अगर आप कैटलिस्ट के बिना यूज करते हो तो आपका फ्रैक्शन कम आता है, मतलब बहुत कम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं. इवन इन आवर बॉडी देयर आर सो मेनी कैटलिस्ट which will speed up our chemical reactions, body processes. Otherwise, it will take lots of time to convert. Am I right? So, can you tell any one biological catalyst? रेनी निकल. Biological catalyst जो हमारे बॉडी में रहता है, जो हमारे बॉडी के एक्टिविटी को फास्ट करता है. बायो कैटलिस्ट किसको बोलते हैं? नो मैम. एंजाइम्स. Very good. Enzymes and hormones, especially enzymes. Enzymes are called as biocatalysts. Enzymes हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स को एकदम फास्ट कर देता है रिएक्शंस को. ठीक है, अदरवाइज दोज रिएक्शन विल टेक्स प्लेस इन द इयर्स, तब तक तो हम लोग मर जाएंगे. तो हमारे बॉडी में कैटलिस्ट जनरेट होता है विच आर कॉल्ड एज एंजाइम्स which will speed up your body reactions also. ठीक है, तो enzymes are called as biological catalyst. उसको बोलते हैं एनर्जी अराउजर और एक्टिविटी अराउजर. कैटलिस्ट का मीनिंग क्या है? एक्टिविटी अराउजर, जो आपकी एक्टिविटी को फास्ट कर देता है. कैन यू गिव एनी एग्जांपल ऑफ एंजाइम? एनी एग्जांपल ऑफ एंजाइम व्हिच इज देयर इन आवर बॉडी? ठीक है, कोई बात नहीं, नेट पे सर्च करके बताओ. आई कैन लाइगेज. अंडरस्टैंड. हाँ, लाइगेज लाइगेज कहाँ यूज होता है ये? बहुत डिफरेंट है. बहुत सारे हैं मैम. हाँ, एक दो बताओ सिर्फ. एक या दो का नाम बोलो. Is DNA polymers. Okay, DNA polymerase. So what is the role of these enzymes? They will speed up your chemical reaction. इसलिए fast हो जाता है, body के जो processes है वो fast हो जाते हैं. तो it is related with chemistry only. Understood? So here we have completed with your chapter. I hope you all understood this properly. If you have any doubt, you can ask. अगर किसी को ऐसे पूछना है, अभी आप लोग अगर टेक्स्ट बुक लेकर बैठे होगे तो आप मुझे बोलोगे मिस आपने ये लाइन से लाइन ऐसे पढ़ाया नहीं, तो मैं लाइन से लाइन नहीं पढ़ा सकती. And I never teach that. It's your duty to sit at home and see all the. ये लास्ट वाला जो मैंने पढ़ाया है ना आपको अभी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट, मैंने बहुत ही जनरल चीजें आपको बताई है. ठीक है, एग्जाम्पल के साथ आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. That you can read. Do you have a textbook right now with you? अच्छा रुको, मैं Yes, miss. स्क्रीन शेयर करती हूँ. वेट, आई विल शेयर माय स्क्रीन. एक मिनट. हाँ, इससे नहीं हो रहा शेयर, मैं मेरे लैपटॉप से शेयर करती हूँ. 2 मिनट दो जरा मुझे, तब तक आप लोग रीड करो. जस्ट गिव मी 2 minutes.